ओके, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि लेजर्स के लिए दो अलग-अलग फाइनेंशियल ईयर्स यूज कर सकते हैं इन एसएपी एस फॉर हाना. ओके, दिस इज अगेन one difference between SAP ECC and SAP S/4HANA. SAP ECC में हम एक ही फाइनेंशियल ईयर यूज कर सकते थे, whereas SAP S/4HANA में हम दो अलग-अलग फाइनेंशियल ईयर यूज कर सकते हैं, जिसको हम पैरेलल लेजर अकाउंटिंग कंसेप्ट भी बोलते हैं. अब कल हमने ओवरव्यू लिया था कि फाइनेंशियल ईयर कैसे डिफाइन होता है, यानी कि कौन-कौन से फाइनेंशियल ईयर बाय डिफॉल्ट SAP प्रोवाइडेड है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे डिफाइन होते हैं, लेजर्स कहाँ पे डिफाइन होते हैं. आज हम एक्चुअल लेजर्स डिफाइन करेंगे एंड उन लेजर्स को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स असाइन करेंगे. अब लेजर्स के लिए ट्रांजैक्शन कोड क्या था हमारा? FP311 FINSC_ledgers. राइट, ये हमारा ट्रांजैक्शन कोड होता है फॉर डिफाइनिंग द लेजर्स. इसमें लीडिंग लेजर इज ऑलवेज 0L एंड नॉन लीडिंग लेजर हम एज पर आवर नीड डिफाइन कर सकते हैं. नाउ आवर कंपनी कोड इज HNMT. लेट अस सी कि HN लेजर यहाँ पे डिफाइन किया है या नहीं. ओके, सो HN इज नॉट डिफाइंड. अब हम क्या करेंगे? फॉर द नॉन लीडिंग लेजर हम HN कोड यूज करते हैं. ठीक है, यहाँ पर अभी HN डिफाइन नहीं है. इफ आई गो ऑन पोजीशन एंड इफ आई टाइप HN कंटिन्यू, हमें HN नाम का कोई आउटपुट नहीं आ रहा है. क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज. HN नॉन लीडिंग, दिस इज फॉर HNMT. ये दो फील्ड्स एंटर करने के बाद प्रेस एंटर की. अब लेजर वाला जो फील्ड है वो ब्लू हो गया. नाउ सिलेक्ट दिस एंड नाउ अगर आपने लीडिंग वाले इंडिकेटर पे क्लिक कर दिया तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ लीडिंग लेजर. लेकिन एट अ टाइम एसएपी में सिर्फ एक ही लीडिंग लेजर यूज होता है, विच इज ऑलवेज 0L. नाउ सिलेक्ट दिस रो, go to company code settings, click on new entries. Our company code is HNMP. I'll press enter key. Fiscal year variant, posting period variant and currency type autofill हो गया. Fiscal year is same as our company code and posting period variant is also same as our company code. ये दोनों भी fields लीडिंग लेजर से पिक होते हैं. इवन करेंसी इज पिक्ड फ्रॉम द लीडिंग लेजर. अब कल हमने देखा था कि फॉर नॉन लीडिंग लेजर वी वांट अप्रैल टू मार्च, बट फॉर द लीडिंग लेजर हमें जनवरी टू दिसंबर का पीरियड चाहिए. So what we will do is we will go back to ledger. अब लेजर HN में इफ यू सी एट द एंड, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है विच इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर लेजर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्रिंसिपल. बेसिकली इस स्पेसिफिक लेजर के लिए आपको कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज करना है दैट यू कैन डिफाइन ओवर हियर. या तो आप इसको कंपनी कोड सेटिंग्स में भी डिफाइन कर सकते हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाले फील्ड में. एंड इफ यू वांट टू अप्लाई मल्टीपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टू दिस वन सिंगल लेजर, इन दैट केस आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर लेजर एंड कंपनी कोड वाला टैब यूज कर सकते हो. हियर यू कैन डिफाइन मोर देन वन अकाउंटिंग प्रिंसिपल. अभी के लिए हम एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज करेंगे फॉर फॉर द नॉन लीडिंग लेजर. कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल होगा वो?
लेजर वाला देखो, this is our leading ledger, this is our non-leading ledger, and this is the country which we are operating in, India. अब for I'll just replace this. अब for Honda Motors India, for the non-leading ledger, कौन सा accounting principle use हो रहा IFRS. है? This is for leading ledger. Yes. For the non-leading ledger, इंडियन कंपनी है. Indian Companies Act, and हमने इस कोड को डिफाइन किया था एज HN. सो वी विल असाइन इंडियन कंपनीज एक्ट. कल मैंने आपको बताया था कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम कहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. Yes, sir. वंस दिस इज डन, प्रेस एंटर. अगर आप यहाँ पे देखो, वी हैव टू करेंसी ऑप्शन. वन इज लोकल करेंसी, जिसको हम कंपनी कोड करेंसी भी बोलते हैं. वन इज ग्लोबल करेंसी, जो ग्लोबल लेवल पे यूज होती है. लोकल करेंसी में वी हैव करेंसी टाइप एज 10. दिस 10 इज कंपनी कोड करेंसी. बट ग्लोबल करेंसी में हमें यहाँ पे कोई करेंसी टाइप नहीं दिख रहा है, राइट? सो वी हैव टू ब्रिंग अ करेंसी टाइप ओवर हियर एज यूएस डॉलर्स. तो इसको याद रखना. नाउ हमने नॉन लीडिंग लेजर्स के लिए सेटिंग्स कर दिए. वी हैव डिफाइंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वी हैव असाइंड पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, वी हैव असाइंड फिस्कल ईयर वेरिएंट, एंड हमने लोकल करेंसी भी इसको असाइन कर दी, राइट? अकाउंटिंग प्रिंसिपल असाइन, करेंसी इज ऑल्सो असाइन, एंड हमने लेजर भी डिफाइन कर दिया. नाउ वी विल change the settings for leading ledger. One second. Go to position and enter 0L. मेक श्योर कि आप यहाँ पे 0L एंटर करो. आप अगर OL एंटर करोगे तो आपको कोई और लेजर डिस्प्ले होगा या तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा. कंटिन्यू. दिस इज लेजर 0L and it is a leading ledger. Select this. Go to company code settings. Continue. What is our company code? HNMT. HNMT. Enter. This is Honda Motors. Select this row. Okay. Double click on it. अब यहाँ पे जो फिस्कल ईयर वेरिएंट हमने हमारे कंपनी कोड को असाइन किया था, दैट सेम फिस्कल ईयर वेरिएंट इज असाइन टू द लीडिंग लेजर बाय डिफॉल्ट. यहाँ पे हमने देखा था कि एसएपी ने दो डिफॉल्ट फिस्कल ईयर वेरिएंट प्रोवाइड किए हैं. वन इज V3 फॉर अप्रैल टू मार्च, वन इज K4 फॉर जैन टू दिसंबर. ये दोनों भी एसएपी डिफाइंड होता है. नाउ फॉर अप्रैल टू मार्च हमारे पास ऑलरेडी फिस्कल ईयर वेरिएंट है जो हमने क्रिएट किया है, विच इज HN. बट फॉर जैन टू दिसंबर, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू फिस्कल ईयर वेरिएंट, हम K4 का यूज कर सकते हैं. ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो एंड एंटर K. प्रेस द की विच इज K. आप K वाले सेक्शन में आ जाओगे. ये सब फिस्कल ईयर का जो रहता है ये स्टैंडर्ड रहता है ना करना, ऐसे पे आप लोग बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करते हैं. Yes, V3 and K4 are standard fiscal years. Now, for the leading ledger, हमने फिस्कल ईयर वेरिएंट K4 सिलेक्ट किया है, विच इज कैलेंडर ईयर. अब कैलेंडर ईयर में मंथ कब से स्टार्ट होते हैं? हमारे कैलेंडर में मंथ्स कब से स्टार्ट होते हैं? जनवरी, एंड कब होते हैं? दिसंबर. तो सेम इज द केस फॉर K4 एज वेल. इट इज जनवरी टू दिसंबर एंड 4 स्पेशल पीरियड. यहाँ पे भी लोकल करेंसी इज करेंसी टाइप 10, which is company code currency as well. Global currency is MT, and accounting principle we want to assign
IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फॉर द लीडिंग लेजर फॉर 0L वी हैव असाइंड IFRS, बट यहाँ पे दिस करेंसी यूएस डॉलर इज मिसिंग, राइट। अब हमें हाँ दोनों भी सर। लेजर्स में दो करेंसी टाइप असाइन करने का ऑप्शन आ रहा था। वन इज लोकल करेंसी, वन इज ग्लोबल करेंसी। यानी कि दोनों भी लेजर्स में वी कैन असाइन इंडियन रुपीज एज वेल एज यूएस डॉलर्स। अब यू कैन सेव दिस। हमें एक वार्निंग मैसेज आ रहा है कि यू हैव चेंज द फिजिकल ईयर वेरिएंट फ्रॉम HN टू K4। प्रेस एंटर एंड कंटिन्यू। अगर आप इस मैसेज को देखोगे, लेजर ग्रुप HN इज क्रिएटेड ओनली विथ लेजर HN। हमने जो लेजर डिफाइन किया था विच वाज HN, उस लेजर के लिए एसएपी ने ऑटोमेटिकली लेजर ग्रुप क्रिएट किया विद द सेम नेम विच इज HN। जब भी आप कोई नॉन लीडिंग लेजर या जब भी आप कोई लेजर्स डिफाइन करते हो इन दिस ट्रांजैक्शन कोड, बाय डिफॉल्ट उस लेजर के लिए लेजर ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है। क्लिक ऑन कंटिन्यू। नाउ गो बैक। ओके, गो टू इजी एक्सेस स्क्रीन और गो टू SPRO, SAP रेफरेंस IMG। अब लेजर के लिए हमें एक और सेटिंग करनी होगी। फर्स्ट इज, आई विल जस्ट शो दिस। इफ यू गो इनटू फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, लेजर्स, अगेन लेजर, इस वाले पाथ से आप FINSC_लेजर वाले ऑप्शन पे जा सकते हो, लेजर वाली स्क्रीन पे जा सकते हो। ओके, अगर आप थर्ड वाला ऑप्शन देखो, दिस इज डिफाइन लेजर ग्रुप्स। जो हमें मैसेज आया था कि लेजर ग्रुप HN इज क्रिएटेड ओनली विद द लेजर HN, so this is where ledger group will be created। execute this। अगर आप पोजीशन में जाओ एंड इफ यू सर्च HN, प्रेस एंटर, सी उस टाइम पे FINSC_लेजर में हमें सिर्फ यहाँ पे लेजर आ रहा था, बट इस वाले इंटरफेस पे वी आर गेटिंग लेजर ग्रुप। दिस इज द डिस्क्रिप्शन फॉर योर लेजर ग्रुप। नाउ लेजर ग्रुप इज, as it as the name defines, ledger group is nothing but a group of ledgers। Ledger group will represent group of ledgers। Now if you select this and if you go into ledger assignment, यहाँ पे हमें सिर्फ एक लेजर दिख रहा है विच इज लेजर HN। ओके, तो इस केस में मल्टीपल लेजर्स असाइन नहीं हुए, बट इफ वी वांट वी कैन असाइन अ मल्टीपल लेजर टू वन सिंगल लेजर ग्रुप। वी विल डू दैट, बट उसके पहले हमें और एक लेजर डिफाइन करना पड़ेगा, और एल्स व्हाट वी विल डू इज, अब जो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट थे वो सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे हो गए। जस्ट दिस ग्रुप करेंसी हमने डिफाइन नहीं किया है। नाउ देयर इज सम रीजन कि हमने इसको अब तक डिफाइन नहीं किया है। फॉर नाउ हम एसेट अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। वंस वी आर एबल टू असाइन दिस लेजर्स प्रॉपर्ली टू द कंपनी कोड, उसके बाद हम करेंसी भी डिफाइन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ एसेट अकाउंटिंग। अब यू नो कि एसेट अकाउंटिंग इज डन फॉर फिक्स्ड एसेट्स, राइट। एसएपी FICO में एसेट अकाउंटिंग स्पेसिफिकली फोकस करता है ऑन द फिक्स्ड एसेट्स। ऋषिकेश, आप हो मीटिंग में? हाँ सर। ओके, अब व्हेन वी टॉक अबाउट,
when we talk about asset accounting, इसमें first step is to define the chart of depreciation. Do you know what is depreciation? ये सर डेप्रिसिएशन अब वो डिपेंड करता है, वो फिक्स एसेट के ऊपर लगता है, जैसे कि फर्नीचर हो गया, कोई मशीन प्लांट एंड मशीनरी हो गया, तो उसके ऊपर लगता है, वो डिपेंड करता है वो कितना लगता है, कभी कभी 7% 12%, वो अपने अकॉर्डिंग वैसे लगता है। मतलब समझो कि ये आज अपन ने कुछ मशीनरी खरीद लिया, कोई फर्नीचर वगैरह, तो वो कुछ दिनों बाद पूरा ना पूरा वो डिप्रिसिएशन होता है उसका। Correct. So depreciation is the reduction in the value of assets due to the wear and tear, right? जो भी assets हम यस। यूज करते हैं उसके यूजेज की वजह से उस एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, which is called as depreciation. अब SAP में for asset accounting we have to assign or we have to define this depreciation. अब इस depreciation में what we are doing is we are using accounting principles, right? And उन accounting principles के हिसाब से हम depreciation calculate कर रहे हैं. We are using IFRS, we are using Indian Companies Act. अब depreciation calculate करने के लिए there are several methods or there are few methods. First is straight line method. Second is written down value method. Third is useful life method. अब मैं आपको ये इन डिटेल नहीं सिखाऊंगा कि ये मेथड्स क्या होते हैं. यू कैन सर्च दिस ऑन यूट्यूब बिकॉज हमें जो मेन चीज़ें हैं वो कवर करना है. इवन दिस इज इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर कि आज ही आप ये 3 मेथड्स देख लो. दिस इज वेरी लाइक बेसिक कैलकुलेशन, ये हमने कॉमर्स में भी किया था. ओके सर। नाउ दिस इज IFRS, दिस इज इंडियन कंपनीज एक्ट. नाउ इंडियन कंपनीज एक्ट में जब कोई एसेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, दैट डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट. जब IFRS में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, दैट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड या वी कैन से बेस्ड ऑन परसेंटेज मेथड. ओके, नाउ लेट्स से कि वन सेकेंड, लेट्स से हमने एक एसेट परचेज किया. वी कैन टेक द एसेट एज लेट्स से एनी फर्नीचर, लेट्स से अ टेबल. अब ये टेबल कंपनी के लिए इट इज अ फिक्स्ड एसेट्स, राइट? एंड इट बिलोंग्स टू फर्नीचर कैटेगरी. नाउ दिस टेबल purchased worth rupees, let's say 10,000. Now SAP S/4HANA में we are using parallel accounting concept, यानी कि हम एक ही बार में दो डिफरेंट लेजर्स यूज कर सकते हैं एंड दो डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज कर सकते हैं. नाउ फॉर दिस टेबल एज पर IFRS हम परसेंटेज मेथड यूज करेंगे. एज पर यूजफुल लाइफ, आई एम सॉरी, एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट हम यूजफुल लाइफ वाला मेथड यूज करेंगे. नाउ इन IFRS we want to, or the company or client wants to depreciate this table at the rate of 10% per annum. हर साल 10% से ये टेबल डेप्रिसिएट होगा. एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट द क्लाइंट वांट्स टू डेप्रिसिएट दिस टेबल विद इन 5 years. नाउ फॉर IFRS
फॉर आईएफआरएस हम यहाँ पे एक डेट एंटर कर देते हैं अब, विच इज लेट्स से 1 अप्रैल या 1 मई. ओके, नाउ इफ दिस इज परचेज्ड ऑन 1 May, तो दोनों भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में परचेज डेट विल बी 1 May ओनली, राइट? या आईएफआरएस में अलग होगा, इंडियन कंपनीज एक्ट में अलग होगा? नहीं सर सेम डेट होगा ना दोनों का. सेम डेट होगा, राइट? Yes. सो purchase date will be 1 May 2025. Acquisition and production cost. Now this acquisition and production cost is how much? 10%. 10,000. And Indian Companies Act में भी APC value is 10,000. अब चेंज कहाँ पर आएगा? चेंज आएगा डेप्रिसिएशन में. नाउ लेट्स से हमने इस एसेट को परचेज किया था 1 May 2025 को. अब आईएफआरएस में हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट होता है? जनवरी. This is January and it ends on December. दिसंबर. इंडियन कंपनीज एक्ट में अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट होता है? अप्रैल. This starts in April and it ends on March. मार्च. अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने इस एसेट को परचेज किया था ऑन 1 May और we will change this date as 15th of May. Okay. Now जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31st. 31. February is 29. Again 31, 30, 30. 31, 31. 30. 30, 31. 31. This is 31. also 31, 30. 31. 30 and 31. right? This is for January to December period. And again, same thing. From April to December, and this is January, February, March. And change this again. Okay, this is January to December, and this one is April to March. अब हमने
एसेट परचेज किया था ऑन 15th ऑफ मई, यानी कि दिस पीरियड, एंड इंडियन कंपनीज एक्ट में इट इज द सेकेंड पीरियड, राइट। एंड इस एसेट को हमने इस पीरियड के स्टार्ट में परचेज नहीं किया था, वी परचेज्ड इट ऑन 15th ऑफ मई। 31 डेज होते हैं जिसमें से हमने 15th डे पे इस एसेट को परचेज किया, करेक्ट। यस सर। Now, if we want to calculate depreciation on this asset, now how will we calculate it? 10,000 divided by 10%. 10,000 divided by 10%. ये Okay, 1,000 का डिप्रिसिएशन रहेगा उसका। sorry. 1,000 का डिप्रिसिएशन लगेगा ना ईयरली। ईयरली 1,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। हाँ, लेकिन अगर आईएफआरएस के हिसाब से देखेंगे तो फिर वो पूरा 1 ईयर का नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो मई से अपने मई को लिया था। हम्म, मई, जून, नवंबर, दिसंबर, तो वो 8 मंथ का डिप्रिसिएशन लगेगा ना टोटल एज पर फाइनेंशियल ईयर करेंगे तो। यस। अगर आप इंडियन कंपनीज एक्ट देखो या ओके लेट अस सी, अगर आप इंडियन कंपनीज एक्ट देखो, यहाँ पे डेप्रिसिएशन इज एज पर द यूजफुल लाइफ। अब हमने इस एसेट को परचेज किया था ऑन 15th ऑफ मई, राइट, यानी कि ये जो एसेट है ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए यूज नहीं हुआ है। अप्रैल मंथ एंड हाफ ऑफ द मई मंथ के लिए इस एसेट को यूज नहीं किया गया। इन दैट केस व्हाट वी विल डू इज वी विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन पर डे, बिकॉज हमें 15th ऑफ मई से इस डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। नाउ यहाँ पे टोटल पीरियड या यहाँ पे टोटल डेज आर दिस मच, राइट। 31 minus 15 is 16, और वी विल से 17 बिकॉज हमें वो 15th मई वाली डेट भी कंसिडर करनी है। सो लेट अस से 17 डेज, एंड रेस्ट ऑफ द डेज आर 305। नाउ 305 plus 17 is equal to 322, right? अब if I want to, let's say कि 3 years हमारे नॉर्मल ईयर्स होते हैं एंड एक ईयर इज आर लीप ईयर, करेक्ट। हाँ सर। सो इट इज 365 plus 365 plus 365 plus 366 plus 365, correct? यस। This is 1826, यानी कि ये 10,000 की वैल्यू जीरो होगी इन 1826 डेज। आप म्यूट कर सकते हो, ओके, थैंक यू। अब 1826 डेज में ये 10,000 रुपीज से ये 0 रुपीज हो जाएगा। इन दैट केस वी विल calculate the depreciation per day. Now 10,000 divided by 1826. This is 5.47 rupees. Now if it is 5.47 per day, तो 322 days के लिए 322 multiplied by 5.47,
तो 322 डेज के लिए द अमाउंट इज 1761 रुपीज, करेक्ट? यस सर। ये कैलकुलेशन समझ आया या कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर, ओके। समझा। आपने इन शॉर्ट में वही किया कि सबसे पहले जो 5 इयर्स का था उसमें से डिवाइड बाय 10,000 किया, और जो फिगर आया अपने को उससे मल्टीप्लिकेशन किया, वो वन जो भी अपना डेज बचे, 3 320 पैसा कुछ आ रहा था तो बोलिए सर। करेक्ट। 1 year depreciation is equals to 1761 rupees. अब इन IFRS हमने मई मंथ में इस एसेट को परचेज किया। फ्रॉम मई वी यूज इट टिल दिसंबर, यानी कि जो पहले 4 महीने थे हमने उसमें इस एसेट को यूज नहीं किया था, एंड इवन फॉर हाफ ऑफ द मई मंथ हमने इस एसेट को यूज नहीं किया, राइट? नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट depreciation here, per annum depreciation should be 10%, यानी कि 12 महीने के लिए वी शुड हैव 10% depreciation। बट यहाँ पे हमने इस एसेट को 12 महीने के लिए यूज नहीं किया, राइट? 4.5 months we have not used, 7.5 months we have used this asset. Again, same thing. For 12 months, it is 1000 rupees. For 7.5 months, the amount should be, this is 7.5 into 1000 divided by 12. The amount should be 625 rupees. ये समझ आया? यस सर। Okay. Or else again, what we will do here is, okay, we will come back to this Indian Companies Act, and यहाँ पे हम per month depreciation का भी calculation देखते हैं। अब our depreciation amount for per day, it was 5.47 rupees. We purchased this asset in the month of May, and May के month में हमने इसको 17 days के लिए use किया था. So this is equals to 5.47 multiplied by 17, which is 92.99 rupees. Now similarly, this 5.47 will be multiplied with the respective days. This is 5.47 multiplied by 30, 164.1, 5.47 multiplied by 31, which is 169.57.
and again 5.47 multiplied by 29, 158.63. The total amount for this is 1761, and even our 1 year depreciation amount was 1761. This is when you purchase asset in between your financial year. Let us say this is year 2024. यहाँ पे भी this is year 2024. सर वो अप्रैल मंथ का भी आपको कैलकुलेशन अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना? Yes, this sorry, not April month, ये ऊपर जाएगा. अप्रैल मंथ का हम नहीं कैलकुलेशन नहीं नहीं उसका करेंगे. कैलकुलेशन नहीं, अप्रैल मंथ का कैलकुलेशन क्यों होगा? See, if you purchased this asset on in the month of May, तो हम इसका depreciation May month से करेंगे, right? यस सर Yes. सॉरी Okay. 2025 के इसमें हुआ था। Yes. 2025 में हम अप्रैल को भी कंसिडर करेंगे. यस सर Okay. We will go on that. पहले हम ये वाला पार्ट समझते हैं. Now, यहाँ पे we have used this asset for 7.5 months. Again, what we will do, let me just delete this. We will calculate depreciation per day. Now, if it is, how much is this? 366. This is 10,000 divided by 366 days, which is equal to, I'm sorry, not 10,000. This is 1,000 divided by 366 days. 2.73. ठीक है. तो per annum depreciation is 10%, which is 1,000 rupees. 1,000 divided by 366 is 2.73 rupees. Now 2.73 multiplied by again 17 days. This is 46.41 rupees. Again 2.71 multiplied by 30. This is 881.3 rupees. 2.71 multiplied by 31, which is 84.01 rupees. अब अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, it comes to around 626.35 rupees. तो in the year 2024, this I will round it off with 626 rupees, and यहाँ पे it was 1,761 rupees.
ठीक है। एज पर IFRS in the year 2024, total depreciation is 626 rupees. But as per Indian Companies Act, total depreciation for year 2024 is 1761 rupees. अब दोनों का depreciation amount अलग अलग हो गया, right? That is the reason we need parallel ledgers and we need two different depreciation areas to calculate this depreciation. अब इतना क्लियर है या इसमें कोई डाउट्स है? नो सर, क्लियर। ठीक। Now what I will do is this was for year 2024. We will come on to the current year जो कि है 2025. Now 2025 में we have to calculate depreciation from the starting month, right? Because इस साल हम हर एक महीने में इस एसेट को यूज करेंगे, करेक्ट? यस सर। Okay. So as per percentage, 2.73 is per day. 2.73 multiplied by 31. 34.3। 84.64. 84.63. Okay. Okay. Now again 2.63 multiplied by 29. अब यहाँ पे हम 29 इसलिए ले रहे हैं बिकॉज जब हमने हमारा फिस्कल ईयर वेरिएंट डिफाइन किया था तब हमने फरवरी के मंथ में 29 डेज दिए थे, देयरफॉर यहाँ पे भी हम 29 डेज ले रहे हैं. This is 76.27 rupees. 2.63 multiplied by how much it is? 30. This is 78.9 rupees. Now, if you calculate this, total comes to 984.28. Let us round it off to 984 rupees. ये क्लियर है? यस सर। अब similarly, till the amount is depreciated fully, ये calculate होता जाएगा. ठीक है. नाउ इफ यू आर चार्जिंग 10% डेप्रिसिएशन यानी कि 5 साल में ये एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, करेक्ट? एनीवेयर अराउंड 5 ईयर. अब टिल द 5th ईयर ये सेम मेथड फॉलो होगा फॉर डेप्रिसिएशन. हम सारे मंथ्स में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, बट लेट्स से कि ऑन 5th ईयर ये एसेट की वैल्यू 0 होती है इन बिटवीन ऑफ दैट स्पेसिफिक ईयर. लेट्स से दैट ईयर इज 2029. अब 2029 में जून के मंथ में इस एसेट की वैल्यू 0 हो गई. अगेन इन दैट केस वी विल यूज दिस मेथड. ओनली फॉर द स्टार्टिंग मंथ एंड एंडिंग मंथ हमें ये मेथड यूज करना है. फॉर रेस्ट ऑफ द मंथ द डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड फॉर ऑल द मंथ्स, फॉर ऑल 12 मंथ्स. ठीक है.
Yes, sir. अब फॉर इंडियन कंपनीज एक्ट ईयर 2025, अगेन यहाँ पे per day depreciation is 5.47 rupees. So 5.47 multiplied by 30, 164 rupees, and 5.47 multiplied by 31. Okay, आपको ऑफिस जाना है ऋषिकेश, राइट? हाँ सर। Yes. This is 169 rupees. And this one is 5.47 multiplied by 29, 158.63 rupees. यहाँ पर total depreciation is 2002 rupees. अभी ये 2002 रुपीज़ है, ये ईयरली आया सर। Yes. अब अगर देखा जाए, if this asset is worth rupees 10,000 and हमें इसको 5 साल में depreciate करना है, तो टेक्निकली यहाँ पे अमाउंट 2000 रुपीज आनी चाहिए थी, राइट? यस। लेकिन if you see in the month of February, the number of days is 29. If we keep it as 28, let's see what happens. This is 153. Now this is 1996.55. Again, there is a difference amount. अब ये डिफरेंस अमाउंट क्यों आ रही है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. व्हाट वी विल डू इज हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं. दिस इज 2002. 3 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। Yes, but that is still fine. वो सर जो अपन पॉइंट में लिए ना, तो उसकी वजह से वो डिफरेंस आ रहा है। नहीं, अब इसको राउंड ऑफ कर दिया ना. नहीं नहीं, अपन कैलकुलेशन के टाइम पे वो पॉइंट के हिसाब से किए ना, Yes. उसके लिए ये डिफरेंस है। अपन मतलब अपन ये नहीं करते कि जैसे कि पॉइंट के आगे जो भी अपना वैल्यू रहता है, तो उसको Mhm. अपन एक या तो ज़्यादा लेते हैं या तो कम लेते हैं मेरे हिसाब से। Now it is 5.47, which is less than 0.50. Let us consider it as 5 rupees multiplied by 30. And this is again 5 multiplied by 31. And this is 5 multiplied by 29. 9. This is going to 1830. यस, ये तो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन है। Correct. Delete this. This is 1997. यानी कि 3 रुपए का डिफरेंस आ रहा है. बट दैट इज स्टिल फाइन बिकॉज ये सिर्फ 1 या 2 रुपए का डिफरेंस है. इट इज नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस. यस सर। 1996.
This is 5.47 multiplied by 29, 158 rupees. ठीक है, let us keep this as 2002 rupees. ये depreciation calculation समझ आ गया? यस सर। Okay. Again, Indian Companies Act के लिए amount is 2002 rupees and IFRS के लिए it is 984 rupees. I'll stop the recording.